Ricardian theory of comparative cost. So in the last class, we have studied how absolute cost advantage can be beneficial to both, both the nations, and how trade is still possible and trade can be helpful. So let me just get free from all those other burdens of the college work. So yes, now let me only teach you, nothing else. बहुत सारा काम साइमल्टेनियसली आता है ना स्टूडेंट्स को, गड़बड़ हो जाता है ना. So yes, let us start with our very own Ricardian theory, which I love to teach you. Still people are coming, joining. Yeah, it's a combined class, so naturally I must have around, according to me, 70 students. Yeah, 70 to 80 students can be expected as per the old data. अभी नया डेटा हो गया तो उसमें कितने आएंगे मुझे नहीं पता, बट लेट्स मे होपफुली अभी तो 57 तक आए हैं. What I'll do is I'll start sharing the white screen. I'll do that. So in the last class, we studied students about what is that? Yeah, it was oh God. Adam Smith's absolute cost differences. Okay, why? Because yeah, there are so many people joining, and in between the other meetings, this, oh God, the concentration thoda sa kam ho raha hai. Yep. Somebody has typed something. Okay, it's a good morning message from Mrinalini. Good morning, Mrinalini. Yes. Adam Smith theory of absolute cost advantage, wherein we have learned that there were two nations and two commodities, commodity X and Y, and nation 1 and 2. And each nation has got some absolute cost advantage over one commodity. So they can exchange those two commodities wherein they have cost efficiency in producing those commodities. And they can exchange those commodities, and then they can produce the goods at cheaper cost, and then international trade is possible. That was the conclusion of absolute cost advantage. So today we will be learning about comparative cost advantage. Students, we have to by heart this theory because objectives में काफी मतलब advantageous चीज है ये. So therefore comparative cost advantage is a very very important theory, और कॉलेज में होता तो बहुत मजेदार पढ़ाई होता था ये. So this is given by David Ricardo. Okay. And obviously it's a very old theory of a very old theory of 17th century. Okay. Sorry, 18th century. 1876 में था, 1917. So that means it is not 17th, 18th, it is 19th century आ जाएगा उसमें. If it is 18, 19 was 20th century. So 19th century का सबसे एक बढ़िया theory था ये. So this theory has got its own importance. Why? Because when I taught you the previous theory, what was that? The previous theory was absolute cost advantage. Okay, let me write down that, because absolute cost advantage was given by Adam Smith. So yes, absolute cost advantage was given by Adam Smith, and students, you all should join on time. 10 minutes late सब joined होते, वो भी online. अगर घर में मतलब कॉलेज में भाग के कैंटीन से टाइम पर आ जाते थे क्लासरूम में, अब ये ऑनलाइन में ज्वाइन करने के लिए लेट ज्वाइन करना, मतलब क्या बोलूं अभी आपको.
सामने होता तो सही में कान पकड़ के सही कर देती थी मैं। इतना बड़े हो गए और ऑनलाइन ज्वाइन करने में इतना टाइम लगते हो आप लोगों को, हाँ? So now, yes, because the thing is, once I start, and then especially when on this white screen, then it appears, and then when it clicks, sometimes it goes somewhere else. So there are a lot of issues from the people who present it also. So इसलिए मैंने कहा, you all should understand. Only आपके एंड से नहीं, दूसरों के एंड से भी समझने की कोशिश करना चाहिए. वो चीज आप लोगों में बहुत कम है, students. I must say this today. Okay, so absolute cost advantage actually taught us about the absolute cost advantage of one product over the other in each country, and then wherever there is cost efficiency is being found, accordingly we can, what do you say, we can actually go ahead with that. Okay, then comes with you can say after absolute cost advantage theory, so his own disciple, that is his own student, was David Ricardo. So David Ricardo thought of like अगर ट्रेड पॉसिबल है तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया तुअर दाल अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है, सस्ते में प्रोड्यूस कर रहा है, तो इंडिया तुअर दाल को, और यू कैन से न्यूजीलैंड एप्पल को, तो एप्पल और तुअर दाल के बीच में ट्रेड होगा. इंडिया तुअर दाल एक्सपोर्ट करेंगे और न्यूजीलैंड तो एप्पल्स को एक्सपोर्ट करेंगे. दैट वे वाज समथिंग डिसाइडेड बाय एडम स्मिथ, राइट? क्योंकि आपको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होना जरूरी था. Okay, so but in case of comparative cost advantage, what David Ricardo thought that like अगर ऐसा है तो फिर हर एक नेशन को स्पेशलाइजेशन जरूरी होगा. International trade is not possible only because international trade actually reduces the cost of production. So that is why we go for trade, isn't it? नहीं, ये तो ट्रेड में जाने का मतलब ही क्या था? There is nothing, it is not required only. ट्रेड में जाने के कुछ मतलब ही नहीं था अगर हमको कोई फायदा नहीं होता इंटरनेशनल ट्रेड से, है ना? तो ट्रेड जा रहे हैं हम, लेकिन हमको बेनिफिट भी होना चाहिए. तो वो बेनिफिट हमको कैसे मिलेंगे? Provided we get this comparatively, like you want to find like there is comparative cost advantage happening. This is very, very important if trade has to happen. Okay, so comparative cost advantage is therefore a very important concept given by David Ricardo, and according to him, like trade is still possible even though the nation is not having any kind of absolute cost advantage. Okay, so any kind of absolute cost advantage. So yes, so David Ricardo believes in that the so-called you can say comparatively cost advantage. So that means अगर कोई भी प्रोडक्ट में आपको थोड़ा सा भी comparative advantage है तो भी trade possible है, and Ricardo has proved it. So it is completely a mathematical theory and a very interesting theory. That is why the base has been taught while learning absolute cost advantage. So David Ricardo's theory of absolute comparative cost advantage is built up with lot of assumptions. So today we will be learning all the assumptions. अगर assumptions भी पूरा पढ़ लिया ना students, आपका आधा काम हो जाएगा. ठीक है? So let us learn the assumptions. Assumptions सारे होने के बाद I will take a small test of yours. So you all should be able to write down the assumptions. Please understand that. ठीक है? आपको होना चाहिए assumption सारे लिखने के लिए, क्योंकि वो जरूरी है. हर एक assumption में एक एक objectives आता है. अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा तो, सब्जेक्टिव होगा तो, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर ऐसे बन रहे हैं जैसे आपके छोटे छोटे आंसर्स आप लिख पाए. अगर ऐसा रहेगा तो यू शुड बी एबल टू नो दैट आल्सो, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड एंड या इट्स वेरी डिफिकल्ट. So now let's move on to this what you call it as theory of what is that? Comparative cost advantage. Okay, इसके बाद लेक्चर है क्या आपका? वो बताओ मुझे somebody. तो ये थियरी थोड़ा अच्छे से हम लोग स्लोली सारा assumptions तुम लोगों से पढ़ा के ले लो, वो अच्छा रहेगा ना? नो ना, ठीक है. तो ये कम से कम assumptions स्टूडेंट्स इसीलिए पूछा मैंने, assumptions कितना है पता है बच्चों? 12. तो 12 assumptions हमको पढ़ के लेना पहले, फिर उसके बाद ये थियरी का एक बेसिक टेबल है, वो टेबल पढ़ना है. उतना ही आज हो सकता है बिकॉज
काफी लंबा चौड़ा थियोरी है, तो कम से कम 2-3 दिन तो इसको लगेगा पढ़ते पढ़ते। नॉर्मली लगता था, लेकिन ऑनलाइन में 2 लेक्चर में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू। तो लेकिन पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ते। यही 2 चैप्टर्स है, ये जो थियोरी का चैप्टर्स है, ये थोड़ा टीडियस है और टाइम लगता है समझने में। भले आप ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हो, लेकिन मैं तो इनजस्टिस नहीं कर सकती ना मेरा टीचिंग में, तो आई कांट डू cheating with my teaching. So I will be doing my best to teach you all those things, and up to you, like how you will understand this. So now, yeah, it's a very interesting theory. Let's learn the first assumption. So बहुत ही आसान assumption है, उसे कहते हैं there are 2 countries and 2 commodities. So the first assumption is there are 2 countries and 2 commodities. मेरे पास पूरा नोट पीपीटी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि I should do like this only. 2 countries and 2 commodities, ये पहला है। और इसको एक शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, जैसे 2C multiplied by 2C। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब है कि उसका पहला assumption है देयर आर 2 countries and 2 commodities। ठीक है, देन द सेकंड assumption, labor is the only productive factor. Labor is the only productive factor. Okay, labor is the only productive factor. One. The second one, labor is the only productive factor. So there are 2 countries and 2 commodities, 2C by 2C. Then वो ये कह रहे कि factors of production. Okay, we have learned 4 factors of production. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, right? Land, labor, capital, entrepreneur. तो उसमें सिर्फ एक ही productive factor ले रहा है, and that is only labor. हमने आइसोकॉन्स में भी सीखा था कि there are 2 factors which comes into production, capital and labor. But this is an you can say a traditional theory, and this teaches you only one thing, and that is that it says that labor is the only productive factor. So there are 2 countries and 2 commodities. Labor is the only productive factor. I hope all my students who are there on screen and listening to me are by hearting it along with me. अगर क्लासरूम में होता तो स्टूडेंट्स मैं by heart कराती थी आपसे, क्योंकि सच में important है इसलिए. Then the third one, labor is homogeneous. So what do you mean by this labor is homogeneous? Very interesting it is. ये कैसे homogeneous हो सकता है? इंसान है ना, homogeneous कैसे हो सकता है? लेकिन assumption है, so we have to create this as a homogeneous one. So how is that possible? वो इधर होना चाहिए ना. Labor is homogeneous. Now, why it is so? Because it's just saying that homogeneity का मतलब ये है students कि like labor is identical in its efficiency and labor is identical in its all skills. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे for example मृणालिनी has got some skill, Herschel has got some other skill, मयूर has got some other skill. सबका skills अलग होता है ना, तो इसी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी विल बी डिफरेंट. इसका मतलब वो ये है कि इफ द स्किल्स आर डिफरेंट करके अगर हमने अस्यूम किया, सो प्रोडक्टिविटी विल वेरी. सो वी डोंट वांट दैट वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी. देयरफॉर वी अज्यूम दैट लेबर इज होमोजेनियस इन ऑल देयर प्रोडक्शन स्किल्स. तो स्किल वाइज, एफिशिएंसी वाइज दे आर होमोजेनियस. ये 3 समझ में आया? एवरीबॉडी प्लीज टाइप यस और नो जल्दी से. Use your chat box, class. Yeah. जल्दी से करना चाहिए. हाँ, वेरी गुड रिया, उमा, मेरे सारे अच्छे लड़कियां. यस, सिबी भी है, वृशाली, दुरफ्शा, और गर्ल्स. यस, सारे गर्ल्स ही है, उसमें एक सिबी बच्चा अच्छा है. हाँ, मयूर ने कह दिया फाइनली. यस, ओके. सो इट इज सेड दैट लेबर इज होमोजीनियस का मतलब ये है. सो ये 3 assumptions पहले वाला अच्छे से पढ़ो भी. व्हाट इज द फर्स्ट वन? देयर आर 2 countries and 2 commodities. The second one, labor is the only productive factor, and the third one, labor is homogeneous in their skills and efficiency. The fourth one, again labor से ही शुरुआत है. Labor is perfectly mobile within the country but immobile internationally. So let us write down that labor is perfectly mobile within the nation
and immobile outside the nation. I mean, we would say outside the nation, or you can also write this as internationally. इसका मतलब ये कि अगर इंडिया में कहीं घूमना है तो अलाउड है, लेकिन नेपाल में जाना, पाकिस्तान में जाना, श्रीलंका में जाना अलाउड नहीं है. Okay, that means the labor is perfectly mobile within the nation and immobile outside the nation. Okay, मैंने ऐसे ही पढ़ा है. Internationally word मुझे ऐसा याद नहीं आता. So I told you that. So इसमें अगर आप assumptions by heart करने की छोटी तरीका ये है कि आप अगर देखा जाए तो 3 तो लेबर के ऊपर ही assumption आया है ना क्लास. Because assumption 1 is there are 2 countries and 2 commodities, 2C into 2C. Labor is the only productive factor. Okay. Then labor is homogeneous. Then labor is perfectly mobile within the nation and immobile internationally. Is that okay? Yes. I think ये आपको समझ में आ गया. चार अच्छा खासा assumptions मेरे ख्याल से मेरे बच्चे by heart कर चुके हैं. Okay. ऐसा मेरे को विश्वास है. हाँ. Then the fifth one, I told you how many more assumptions are there? There are 12 assumptions. So हमको by heart करना है students. The fifth one, cost of production is measured in terms of labor units involved. That is labor hours required to produce the commodity. तो ये बहुत simple चीज है, cost of production. Okay, how do you measure it? How do you measure it? It's very important. Cost of production is measured in terms of labor hour. तो मैंने वो एडम स्मिथ का थियरी में आपको कहा था कि 20 लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कमोडिटी एक्स. तो इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट्स. इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक. इट बेसिकली सेज दैट ये लेबर आवर्स से वजह से कि like the lesser the number of labor hours used, so it says it is better the production. So cost of production is measured in terms of labor hour means it's a beautiful meaning. Okay, there is nothing as such like that. So it says cost of production is measured in terms of labor hour. So all of you got it. Like Mayur, for example, Mayur can produce 10 units of chocolates in 1 hour. In 1 hour, Mrinalini can produce 10 units of chocolates in 30 minutes. So who is more efficient? People tell me, who is more efficient? Is Mrinalini efficient or is Mayur efficient? People are not answering only. Yes, class, who is more efficient? Somebody has written. Okay. Mrinalini is efficient. Preeti ने लिख दिया. Mrinalini is efficient. Yes. So हमारी Mrinal is efficient than Mayur, because Mayur को 1 घंटा लगता है और इसको आधा घंटा लगता है. तो बहुत ही सिंपल है. वही वैसे ही मेजर करते हैं लेबर आवर्स में. Understood? So if somebody says that 80 labor hours are required to produce 1 unit of wine, and another country 90 labor hours are required to produce 1 unit of cloth, so we have to understand that like 1 unit of wine, 90 units. So we have to understand the nation who is producing with 80 labor hours is better than 90 labor hours. बस वही चीज इन लोगों को बोलना था. I think you got it. Because why I am repeating it again and again, because it's a, you can say 19th century wala theory hai. Barter system hua karta tha. And I am teaching the same concept to the students who are using not just, you can say, plastic money, but online money. It's beyond that. So I have taught the old generations of those from the currency, paper money to the online money now. So I can understand like it is very difficult for you to accept like labor hours में कुछ चीजें कैसे measure किया जाता है. That is why I want to make the things very simple for you and I want to tell you this. So don't confuse yourself. बहुत ही पुराना theory है, तो to bring into your that level, you have to reduce your level. थोड़ा बहुत ही simple चीज है, but you should understand this. Then another thing, very interesting thing is that there is free trade between the countries. मतलब trade को कोई tariff नहीं होता था, तो ना कुछ टैक्स किया जाता था, कस्टम ड्यूटी नहीं होता था. ओके, सो लाइफ यूज्ड टू बी वेरी इजी ओवर देयर. देयर इज फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज. सो ये अलग, यू कैन से दिस इज द
Next part of the theory, there is free trade between the countries. So Sarah 6 assumptions. Let's repeat again. I hope all my students know this. So there are two countries and two commodity model. The model is known as Ricardian theory of comparative cost advantage because there are only two countries and two commodity model existing in this theory. The second one, labor is the only productive factor. Very, very interesting. Labor is the only productive factor. That means no other factors of production are there in the picture. Third one, labor is homogeneous. That means labor, all the laborers have got identical skills of production. Very, very essential to understand this. Then the fourth one, labor is perfectly mobile within the nation and immobile internationally. He can move around anywhere in the nation and then he can start working, but he is not allowed to move outside the nation. Assumption number 4. Fifth one, cost of production is measured in terms of labor hours. Cost of production is measured in terms of labor hours. Very, very important. Cost of production is measured in terms of labor hours. So that means the cost of production will not be measured in any other things. It will be measuring in labor hours. Okay, labor hours. How many labor hours are required to produce 1 unit of output? That is how we are going to measure it. And the simple one, there is free trade. No tariff, no tax, no custom duty will be charged between whenever trade happens. There is free trade happening. So freely roaming around trade. Then another one, the most controversial one, there is no transport cost. वो तो हम सोच ही नहीं सकते है ना students. There is no transport cost. So we have to understand that transport is free, isn't it? So there is no transport cost. कैसे भी हो, लेकिन transport is free. So you have to understand. Basically, इसका मतलब ये है कि this cost is ignored. अगर रहेगा तो भी उसको इग्नोर किया गया है लेकिन इग्नोर किया है. तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके लिए लिखा मैंने, हाँ, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे. नेक्स्ट, there is no technological change. Technology is not going to change. Technology is going to remain same. There is no technological change. Okay, simple. Then there is perfect competition in both the commodity and factor market. यहाँ हमको explanation की जरूरत है. There is perfect competition in both commodity and factor market. There is perfect competition in both commodity and factor market. Okay, remember this. There is perfect competition in both commodity and factor market. What do you mean by this? Everybody knows what is perfect competition. आपको मैंने पढ़ाया था students, perfect competition क्या होता है? कांदा बटाटे का मार्केट याद है? सब्जी और फ्रूट्स का मार्केट होता है. परफेक्ट कंपटीशन, वहां पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, परफेक्ट नॉलेज होता है, एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट इट. So that means about commodities, whether it is about commodities or whether it is about, you can say, whether it is about commodities or whether it is about factors, okay, about factors of production, जैसे लेबर है, तो वो सारे चीजों में everybody knows, everybody is aware of everything, everybody knows the price, everybody knows the market. So it's a very identical kind of a market and an ideal type of a market. So therefore they follow perfect competition. So a market which is existing in this particular theory according to the assumptions is perfect competition. So remember this. So there is perfect competition in both commodities and factor market. Okay, रट्टा मारना है आपको, हाँ, मैं कभी ऐसे रट्टा मारने के लिए बोलती नहीं, लेकिन ये करना पड़ेगा. नेक्स्ट, production is constant returns to scale. Production is constant returns to scale. Okay, production is constant returns to scale. So we have to understand that, yeah, production is constant returns to scale. There is there's a constant returns to scale. Production is constant returns to scale. Constant returns in the sense the returns which we obtain. If you recall your first year BCom classrooms, I know you can't recall easily, especially economics. So we have studied marginal
theory of marginal returns, wherein I taught you whenever there is your marginal cost is equal, you get constant returns. Your total cost will keep on increasing, but marginal cost, if it is equal, so your production is getting constant returns, and the returns are always in a horizontal curves. So in the sense, production is, although you find total cost is increasing but marginal cost remains same, and you get an equal production, equal amount of returns. Everybody is getting equal amount of returns. That's why production is subject to constant returns. So that is our 10 assumptions. So you recall this, like there is free trade between countries. You understand that. There is no transport cost. You just have to understand like it is ignored. Then there is no technological change. There is perfect competition in both commodities and factor market. And production is constant returns to scale. I hope everybody understood this up to 10th. Now 2 more. इसके बाद मैं 5 minutes का आपको पढ़ने के लिए दूंगी. उसके बाद I will make you write this. इसके बाद we will start with the table. इतना आज हमको करना है, ठीक है? तभी जाके theory ठीक से जाएगा. Then next one, production is constant returns to scale. I have already written. Now the next is there is full employment. What is that? There is full employment. Okay, my students, you know what is there is full employment when you call this as full employment. So therefore, to make you understand, I will add this word also. There is full employment of resources. So इसका मतलब ये नहीं है कि full employment का मतलब ये नहीं कि human being सारे employment मिले. ना, it is not that. Okay, it's not that. So फिर ये क्या होता है full employment? आपने पढ़ा होगा last year, लेकिन मैं I would like to repeat it again. Full employment तभी होता है students, like whenever there is, all the resources are employed. For example, you have a house, extra house, 2-3 आपके पास 2-4 घर है और वो उसमें एक ही घर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी घर ऐसे ही बंद है. इसका मतलब है those resources are not employed. Wherein all those houses you have already given it for rented house, okay? और आपको rent मिल रहा है. इसका मतलब है आपके सारे resources employed है. I hope you are understanding this. Then you have some fruits ka tree with you, or you have some vegetable trees with you. You are not eating the vegetables. It is not employed. You should eat the vegetables. Then it is employed. Understood? So that is the meaning of full employment of resources. So all the natural resources, for example, you have rubber tree, you should know how to tap it. You have coconut tree, you should know how to use the coconuts and use it. So that means when you don't use the things, it becomes unemployed. You have to use the resources, whether it is human resources or it is natural resources, but you should know how to use it. So then it becomes resources. Then it becomes full employment. Is the meaning of full employment of resources clear to my darling students? Yes or no? बोलो जल्दी बोलो. Yes, Devang has understood it very nicely. Very good, very good. ठीक है, तो अब सबको समझ में आ गया. तो आप अगर ऐसे ही बर्ड में पड़े रहेंगे तो आप सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयड बंदा है. लेकिन आप पढ़ने के लिए बैठ जाए ना तो योर रिसोर्सेस एम्प्लॉयड. सो दिस इज व्हाट माय स्टूडेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड. सो एम्प्लॉयमेंट तभी होता है व्हेन द रिसोर्सेस आर बीइंग यूटिलाइज्ड. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी यूटिलाइज्ड. अभी हमारा लास्ट असम्पशन. तो अभी समझ में आ रहा है ना, ये थियरी जो है बड़ा टेढ़ा है ना. तो हम शुरुआत में है, ये आसान है. उसके नेक्स्ट वाला थियरी तो और कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत इजी है. ये क्लियर कट थियरी, इसमें 12 असम्पशन है, फिर एक टेबल है. तो वो एक टेबल को मैं मल्टीप्लाई करती जाऊंगी. देयर इज नो डायग्राम्स इन इट. आपके टेक्स्ट बुक आप प्लीज टेक्स्ट बुक मत खरीदना. मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मत खरीदना. वेस्ट ऑफ मनी है. 200 रुपये 300 रुपये क्यों खरीद रहे हो? ठीक है, ये सब नोट्स में डाल दूंगी. और मैंने तो इस बार प्रॉमिस किया है ना, आई विल पुट इट नाउ इटसेल्फ दैट शेड पब्लिकेशंस का एमसीक्यूज फुल टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन, मतलब एमसीक्यू वो मैं डाल देती हूँ अभी आपको. टेक्स्ट बुक मत खरीदना. देन ट्रेड बिटवीन 2 countries टेक्स प्लेस ऑन बार्टर सिस्टम. ये तो इसका एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है. माय स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बार्टर सिस्टम. इवन टुडे देयर इज बार्टर सिस्टम एग्जिस्टिंग. मुंबई में सबसे ज्यादा बार्टर सिस्टम एग्जिस्टिंग वाला एक चीज है. बहुत सारे चीजों में होता है, लेकिन बहुत ही कॉमन देखा गया है हमने कि लाइक बार्टर सिस्टम में कैसे होता है. वो क्या कहते हैं, वो
he was telling me recently, utensils. So you can give clothes and you can get utensils. बर्तन वाले आते हैं and then they get it. तो हम लोग की सब सोसाइटीज में ऐसे कि ऐसा कोई लोग अलाउड नहीं करता है. But when you'll get into those oldest ones where there is no big security and all those particular things, वहां पर ये लोग सब allowed है. And they go home and they sit over there. दिवाली की सफाई में लोग कपड़े निकाल रहे हैं और बर्तन ले रहे हैं in return. So this is nothing but barter system. So आप इतने कपड़े दो उतने आपको मिलेंगे. So I have heard all the stories from my grandma when I was young. So she used to tell how they used to buy vegetables. So she used to say like she used to give one coconut for which she used to get basket full of vegetables. So this is barter. This is barter. So I hope you understand what is barter. If you have seen, एक चीज दो उसके कीमत के हिसाब से वो चीज के कीमत के हिसाब से आपको दूसरी चीजें मिलेंगे. उसको barter system कहते हैं. तो ये थियरी ऐसा है कि like this theory takes place between the trade between the two countries, basically takes place in barter system. Okay. Takes place लिखना पड़ेगा ना. On barter system. Yes. So these are the 12 assumptions. देखो बच्चों, I took 30 minutes to explain 12 assumptions. Please understand, more than 30 minutes. So now you have to study this. उसके बाद आपको लिखना है. ठीक है, पहले पढ़ो. 5 minutes to study. उसके बाद अपने को टेबल शुरू करना पड़ेगा. Yes. दुर्फशा बाहर गई, अंदर आई. Yes. Quickly read it. पढ़ लिया? तो मैं अभी स्टॉप शेयरिंग करती हूँ एंड देन एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका. नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं, आलसू बच्चे मेरे. प्रेम ने अपना माइक सब ऑन करके रखा है, तो लेट मी आस्क प्रेम ओनली फर्स्ट. प्रेम, मेरे अच्छे बच्चों में एक बंदा है प्रेम, जो मेरा लेक्चर रेगुलरली अटेंड करता है. जो मेरे लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करने वाले बच्चों से मेरे को ज्यादा प्यार है, नो डाउट. ओके. या प्रेम लेकिन कहाँ गया? हेलो, कुछ तो है इसका. Fine. So let's start. I think you all can write down. All of you have to write minimum 4 assumptions on the chat box. Do that. Don't worry, we will start the theory later also. महक ने सबसे आसान वाला डाल दिया. Wonderful. 4 assumption महक, 4. Good girl. चलो. Start writing. Let me open the chat box and keep it. Yes. महक का सबसे पहले आया. Wonderful. My God, किसी ने तो कॉपी करके पेस्ट करके रख दिया था. इतना सारा मृणालिनी ने सारे लिख दी. वंडरफुल. वाओ, इतनी जल्दी. सुपर. मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं. दे आर हियर टू स्टडी. वंडरफुल स्टूडेंट. ओके, गुड. पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. यस. मुझे मयूर से प्रेम का आंसर नहीं आया, रिचर्ड का आंसर नहीं आया.
मयूर ने लिख दिया 4, पहले से लिख दिया. ओके, तुम लोग का पढ़ाई हो रहा है स्टूडेंट्स ऐसा करने से. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट. दुर्लभशा, गुड. कीर्ति मेरी बहुत मेहनत से लिख रही है एक एक करके मेरी बच्ची. यस यस, गुड बच्चे. मंकिता, पता है तुम लोग का मार्क्स है ना, मेरे को सबसे पहले देखने का मन होता है एग्जाम होते तो, क्योंकि तुम लोग सब मेरे मतलब ऐसे अंबिका पहले पहले ज्वाइंट होती है मेरी बच्ची, है ना, अल्फी, सब लोग ऐसा, तुम लोग का नाम सबसे याद भी आता है रवि, सीरियसली. उमा, ऑल दिस चिल्ड्रन का, तुम लोग को मार्क्स कम होते तो मेरे को रोने को आता है, क्योंकि जो क्लास में आता नहीं है वो लोग कहीं ना कहीं से कॉपी मार के ज्यादा मार्क्स कमा के लेके जाते, तो आई फील वेरी बैड. आई एम मोर कंसर्न विथ फॉर माई चिल्ड्रन हियर, जो मेरे क्लास में आता है, ये सच है. यस, वंडरफुल. लिख रहा है शेजल, गुड बच्चा. मुस्कान, यस. डिम्पल, all my good students have written down. Yes, Zareen, हर्षल, अच्छे लिखा हर्षल ने. आज चेतन भी बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है, वेरी गुड चेतन. प्रेम का आंसर नहीं आया ना स्टूडेंट्स? प्रेम ने नहीं लिखा. ओके, सौभाग्य, सौभाग्य ने 2C into 2C वाला थियरी लिख दिया. प्रीति तिवारी, ये कौन है 12 का 12 लिख दिया, भी अच्छा ना. रिया, रिया अमेजिंग, पूरा 12 लिख दिया उसने, वेरी गुड. शेजल, गुड किडूस. तुम लोग तरक्की करोगे, अच्छा ही होगा, मतलब इन द सेंस यू ऑल हैव रियली रिटन डन वेल. अभी थोड़ा फ्लो खत्म हो गया मेरा चैट बॉक्स में आने का. इट वाज नाइस टू सी यू ऑल पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेशन नहीं करते ना स्टूडेंट्स, तुम लोग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को तो बहुत बुरा लगता है कि आई फील लाइक इंसान से नहीं बात कर रही हूँ मैं. yeah. मयूर ने अभी फाइनली पूरा 12 लिख दिया. वंडरफुल मयूर, तुम तो 2 in 1 हो बाबा. 16 तारीख को कॉलेज आना है ना मयूर? मैं आऊंगी, मैं रहूंगी. Yes. Yes. I'll be there. I'll be there. On 16th. वो ब्लड नहीं दे सकते ना रे, कितना साल से मैं देना चाहती हूँ. स्टीरियॉइड्स का ब्लड है, कौन लेगा? Yep. अक्षय क्या हुआ, तुमने लिखा नहीं? अक्षय, या सबको बता दो ब्लड डोनेशन है कॉलेज में, आ जाओ और खून थोड़ा सा दे दो, बिकॉज people need blood, you know, on 16th January. Everybody please come. मेरे जगह पे और कोई दे देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में बच्चों, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में, बट मेरा खून रिजेक्ट हो जाता है हर बार. And they always say that don't give because of the medicines I take. I survive on medicine, students. ठीक है ना, सरवाइव तो हो रहा है ना, सो गया. नहीं मयूर, तू मत देना मेरे लिए, मेरा बच्चा. You don't give. Excuse me, ma'am. Yes, who is this? Harshal. Ma'am, बोल. ma'am, I just wanted to know when would we be ideally getting our semester results? By this month end, sure.
मार्कशीट्स नहीं है, रिजल्ट ऑनलाइन आ जाएगा. Okay, ma'am. Because like You'll it get was kind of worrying me as to like because I'm still not clear on how the like paper marks are to be calculated. no. See, there is a conversion system, and the whatever you have, I mean, written for 50 marks. So that will be first converted into 40, then it will be converted into 100. Okay. Yes. And the conversion is possible, no? Like, for example, yours, it will be, I think, 1.5 marks each, something like that, they calculate. And if you are scoring above 40, for example, out of 50 marks ka paper you have written, okay? Herschel has scored 45 out of 50 because you all have Yes. written out of 50, no? Yeah. So, Yes, Herschel, ma'am. you will be getting 100 out of 100 when you convert Oh, it into 100. Yeah. And if you get oh, 40 out of 50, then also you will be getting 100 out of 100. So okay, below ma'am. 40 only will be less than 100. Understood? Otherwise, above 40, 40 and above is going to be 100. So therefore, Oh, many of you will be getting 100 out of 100 in many subjects since you have performed well. hopefully, ma'am. Very nice, na? 100 out of 100 mila. Last time, Yes, मेरे ma'am. sixth semester का students, they all were having, 10 CGPA इतना आसानी से. 10 CGPA. You can't even imagine if you write like normal exams. So you all are very lucky in that case. Yes, ma'am. Yeah. Most of Ma'am, it's you good. will be getting it. Economics का मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी सब में तो मिल जाएगा. थियरी में Yes, थोड़ा ma'am. प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है कि पीपल फेल नहीं है, मैंने तो सुना लोग फेल भी है. It तो would still be बिकॉज pretty weird, ma'am. Getting 100 out of 100 in all subjects if that happens. नो इन द सेंस लक है बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में कहाँ क्लिक होता है. सम पीपल का तो जल्दी पेपर भी खत्म हो गया था एंड दे वर नॉट एबल टू. फिर हमने Yes, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया था. जैसे मैंने लास्ट में लिखा था सबमिशन करके एक अलग पार्ट, उसके वजह से किसी का स्किप नहीं हुआ मेरा पेपर. बाकी कितना पेपर उसके पहले वाले स्किप हो रहा था. सो मच ऑफ yes, ma'am. प्रॉब्लम्स. तो लक भी बहुत इम्पोर्टेंट है. होपफुली 100% रिजल्ट आ जाए, सब पास हो जाए तो अच्छा था. मेरे को तो उतना ही है. Yes, ma'am. क्या हुआ संतोष, आपने क्या लिखा है? मतलब नहीं है लेकिन इन द सेंस. संतोष क्या लिखा है बेटा? मेरे को समझा नहीं. कैसे बच्चे, कुछ समझता नहीं है मेरे को. कुछ भी लिखते रहते हो. तो अभी तो माय गॉड इट इज 17. आई वोंट बी एबल टू स्टार्ट विद द टेबल. देन वी विल स्टार्ट विद द टेबल फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स. ऑल्दो इट इज ए एंड बी टुगेदर बट इट्स ओके. आपका वैसे भी हर चीज साथ में ही है अभी. TYBCOM A and B. 6. ओके नहीं लेकिन MCQ थियरी का अच्छा था. ओके 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 ओके. थियरी का अच्छा था ना, तो यू विल बी गेटिंग इट स्टूडेंट्स, यू डोंट वरी. कॉलेज ओपन होगा फरवरी में क्या? ये बात जो है ना, कॉलेज ओपन वो सबसे अनसर्टन थिंग है अभी वर्ल्ड में. ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में शुरू किया और इट्स गोइंग ऑन. तो हमारा स्टेट थोड़ा ज्यादा हिट स्टेट हो गया ना अभी. तो होपफुली अपना भी हो जाना चाहिए, लेकिन इतना जल्दी इतना ज्यादा बच्चों को नहीं बुला सकते ना हम लोग. आप लोग बुलाएंगे तो सब भाग दौड़ के आएंगे, लेकिन आपका पेरेंट्स भी तो मना करेंगे आपको. वो सब टेंशन है अभी, बहुत सारा टेंशन है. स्कूल भी रीओपनिंग है तो भी बहुत सारा लंबा चौड़ा लेटर्स लेने के बाद वो लोग रीओपन कर रहे हैं. सो देर आर सच काइंड ऑफ इश्यूज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो आई होप विल डू दिस. लेकिन आज कंबाइन करने के बाद भी 60 स्टूडेंट्स आया, मतलब इट इज नॉट अ गुड जेस्टर फ्रॉम योर एंड. आप लोग को लास्ट टाइम अगर थियोरी में ज्यादा मार्क्स मिले तो बिकॉज
you all have attended the class also. लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो